we have always been told that, TISS is only and only for HR. I think this is not correct, because yes, it was earlier, and now if you look at, there's a little bit difference also, which I'm going to explain it to you now. Okay, now before I go ahead, right, let me tell you a couple of assumptions that I have as far as this video is concerned. My assumptions are, number one, you are not somebody who is looking for a core profile. Okay, what I mean by core profile is basically, say if I talk about finance, then in finance you want to work in financial valuation, equity research analyst, you want to work as an investment banker, you want to work into M&A, you want to work into wealth management, you want to work in FMCG, or you want to work in as a branding domain person, whatever, right? So this is something you are not looking at. Okay, you don't want to work in the hardcore profile. Now, second assumption is basically is that you are somebody who is giving a priority to these things. Number one, profile. Okay. Number two, career growth. Now, this is damn important, because no one care a damn about package after some point in time in life. But yeah, your profile and your career growth would matter a lot. So career growth is number one. Then yes, you should and you must enjoy your job. Number four, last but not the least, that's called as package. Okay. Now, why profile matters a lot? Because trust me, I will tell you this experience that, that a lot of people, like, there are students like you. Once you're out of your B school, once you get a job of 15 lakhs, 20 lakhs, whatever. Now, there are a lot of people who will be telling you, get into this B school, get into that B school, 20 lakh milega, 30 lakh milega. Now, that 20 lakh and 30 lakh will not have any value if you do not enjoy your profile and if you do not enjoy your job. So trust me, I have seen people working on 30 lakhs and they are still not happy with their job, and I've seen people working on 15 lakhs and they are enjoying every fucking minute of their job. So profile would matter a lot, and that's the reason I came up with this video, wherein I wanted to give you a different perspective. The only thing is that I have been telling to this my classroom students in Pune. I have been telling to this to my students. They have been they've been able to kind of implement this, and they got fruits of it. This is the first time I am coming this with this concept on online. So trust me, it's gonna change your perspective. Now let's understand what as an HR is a job profile. HR का एक job profile क्या होता है, ठीक है? Now अगर हम HR की बात करें तो HR को कैसे perceive किया जाता है? So lot of people say that HR is nothing but a supporting function. Okay, yes, understood. This is what you will be studying in your textbook also once you join a B school. But now, is it 100% supporting function the way it was earlier? No, it's not. It's not anymore a supporting function actually. Now, I'm going to prove this to you. Okay, now let's talk about HR ke jobs kya hota hai. So the first thing that HR does is basically these guys are into recruitment. Okay, then these guys are into say something called as legal. So legal की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे हम बात करते हैं labor laws and all that stuff की आपको ये profile नहीं मिलेगी till the time you are somebody who wants to work into manufacturing. Then comes compensation and benefit. This is a amazing profile. Comp and Ben is a great profile. जैसे finance में investment banking है वैसे HR में comp and Ben है. Then comes a new profile these days in the market, that's business HR. Then comes corporate HR, and then comes PR. Okay, now these are the profiles that HR has. Now people typically perceive HR as somebody whose job is writing an emails, talking to the clients, taking care of your interviews, taking care of your exit interview, doing a touch-up for like 5 times a day, spending hours and hours in the canteen and gossiping and all that stuff. No, this is not what HR does these days. Okay, if you are an HR coming from a good B school, trust me, if you're working on a good profile, this is not something that you're gonna be doing at all. Now, let's understand how can a marketing guy, finance operations guy get benefit from TISS and get benefit from doing an MBA in HR domain. Okay, now let's go one by one. Before we go ahead, let's understand types of HR. अभी ये कहीं पे textbook में नहीं है. This is my concept. I am using this jargon. Okay, so number one is there are plain HR. Okay, plain HR, and number two is there are domain HR. Now, domain HR are quite important. Okay, it's a new concept in India, by the way. Plain HR का मतलब होता है as an admin, so he does only HR वाला job. Now, domain HR is something I want you guys to be really focused on. So let's say you are somebody who wants to work in a finance domain. Okay, you want to work in a finance domain, and say you're working with a bank. Okay, you're working with a bank. I'll give you my example. Okay, so when I work in trading domain, right, say we need to hire a couple of heads.
we need to hire a couple of students, or we need to hire a couple of candidates. What do we do as a main person, right? What do we do is like we go to HR, we tell them, you know what, this is our requirement, this is what we want on a JD. Now please hunt some people for us, hunt some good resume for us. Now, what does HR do? If he or she is a plain HR, has no goddamn clue about finance, has never studied finance in his life, maybe as an engineer or HR, or maybe somebody pharma and HR, right, from TISS or even from IMS, doesn't matter. So what happens basically is that now a lot of companies these days, they have outsourced their HR function to some other company. So what they do is these HRs get into contact with those outsourced wala companies in the market, and then they tell them that, you know what, hamari ye requirement hai, please send us some resumes, right? Now here is the biggest mismatch that is happening, and this mismatch is basically the operations guys or the main guys are not getting the kind of candidates they want, okay? Because my HR does not understand trading, my HR does not understand structured product, my HR does not understand my core business, my HR doesn't understand anything about finance and its concepts. And that's the biggest problem, guys, okay? Now, say if you are somebody who has done a BCom, or you have done some BBA, BFMS, or whatever things like that, right? And then this is your technical knowledge. You went to TISS, right? You did HR management. Now you understand the domain knowledge of HR, that how an HR should work, function, whatever. Now, if you are in this position, and if this is you, when your operations guy tell you that, you know, I'm looking for, 5 people in structured products, trading, right? What you gonna do? You already know concept, you already know what is structured product, you know how does investment bank work, because that's what you have studied in your graduation. Because you know finance, you're gonna be a deadly combination, because you know technical stuff, you know domain stuff, you're gonna be goddamn more effective, and you are going to bring candidates which match profile exactly. So 100% spot on candidates you will get for your management. Now this is where you grow the ladder up, and then we say, we moan, we keep saying that अरे यार HR में तो जॉब ही नहीं है, अरे यार HR में तो कुछ होता ही नहीं है, HR मत करना, मार्केटिंग करना, फाइनेंस करना, ऑपरेशंस करना. HR में जॉब है, HR में बहुत सारा मार्केट है. See, you guys need to understand, you guys need to use your brains that India is a service industry. India is not a manufacturing industry. Now let's not talk about artificial intelligence, and let's not talk about automation and all that, but कुछ भी हो जाए, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, इंडिया में ह्यूमन पावर लगेगा. So whenever there is human resource, whenever there are people working in companies like 20,000, 30,000, whatever number are there, working in companies, you will need HR. And trust me, if you want to cross verify, do it. Go back 10 years. Okay, go back, ज्यादा नहीं दूर जाना, go back 2008. जितनी HR की रिक्रूटमेंट पहली होती थी, उससे कई गुना HR की रिक्रूटमेंट्स अब हो रही है, हर एक डोमेन में हो रही है. So this is something people will not be telling you. This is something nobody wants to tell you, and that's the reason I am telling you this, that guys, you are MBA aspirant, you are somebody who will be managing the market, who will be driving the market, who will be putting a dent on the market, if at all you are from a good B suit, right? So you guys need to understand this. 10 साल पहले HR का रिक्रूटमेंट कम था, आजकल रिक्रूटमेंट ज्यादा होने लगा है. 10 साल पहले जितना लोग HR लेता था, आज उससे कई गुना लोग ज्यादा HR लेता है. 10 साल पहले जितनी वैकेंसीज थी, आज उससे कई गुना ज्यादा है, और ये बढ़ते रहेगा, because India is a fucking growing economy and we need human resources. So your job is not to become an HR only. Your job is to become an effective HR who understands the technical stuff and who understands domain also. This is what my message is. So if you're somebody who wants to get into finance, right? Yes, you can do an HR from XLR at TISS. You can join some banks, because TISS में banks आता है. You can join MBFCs. You can join investment banks. You can join hedge funds. You can join any goddamn company that has something to do with the finance. Yes, that you can do. Now let's talk about your banks, right? बहुत सारे banks आते हैं यार, Substancy आता है, Kotak आता है, and they hire on a very good package. So now, so you're a BCom guy working, like did your HR, got into Kotak, bare minimum package आपकी होगी. See, HR की average package is round about TISS में 18.50. So 18.5 लाख की आपकी पैकेज है, आपकी फीस है 80K. iPhone X इससे भी ज्यादा महंगा आता है, 80,000 2 साल के भरो, 18.5 लाख की जॉब लो, योर लाइफ इज सेट. प्लस अगर मैं आपको कंपनी का एक प्रोफाइल बताऊं, 3 लेवल होते हैं कंपनी में. जो बच्चे मेरे पूना के, वो उनको पता है अभी सर क्या बोलने वाले हैं. सो यहाँ पे होते हैं आपके सब CXO, यहाँ पे होती है आपकी मिडिल मैनेजमेंट, यहाँ पे होते हैं, आई विल नॉट से दैट वर्ड जो मैं क्लास में बोलता हूँ, दिस आर लाइक लीस्ट इंपॉर्टेंट.
लिस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे झुंड की झुंड काम करती है. सो इफ यू आर समबडी कमिंग फ्रॉम टिस, guys, you're going to join company at this level. Okay, your decisions will matter, you have decision power, you have that financial power, you are a part of management, and that's how you're going to love your profile, and that's how you're going to enjoy your job. So now this is the biggest advantage that you have. Jamnalal Bajaj 18.5 लाख की एवरेज पैकेज, फीस है 6 लाख, राइट. टिस ज्यादा बोलबाला नहीं है, ज्यादा मार्केटिंग नहीं है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी. एनीवे, तो एचआर आपने कर लिया, बैंक में गए, एनबीएफसी में गए. यार बैंक में क्या होता है ना, वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोफाइल होती है, नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना प्लीज. वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोफाइल होती है, ये प्रोफाइल होती है फाइनेंस प्लस सेल्स की कॉम्बिनेशन. अब बहुत बार क्या होता है, जब एचआर को जॉब मिल जाती है कि भाई आप लोग जाके वेल्थ मैनेजमेंट के लिए बच्चे हायर करो, एचआर का फोकस यहाँ पे क्या होता है, यार ऐसे किसी बंदे को हायर करो जिसने सेल्स करा है. तो एचआर क्या करते हैं, सेल्स वाले बच्चे को लेके आते हैं. फाइन, जैसे अपनी बात करी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया की जो भी बैंक है, आपको तो पता है वहां पे रोज 10 लोग छोड़ते हैं और रोज 10 लोग ज्वाइन भी करते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे आप सेल्स वाले बच्चे लेके आते हैं, तो उसने कुछ भी सेल करा हो, उसने पेन सेल करा हो, उसने कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी सेल करा हो, एनीथिंग, बिकॉज यू आर ओनली लुकिंग एट सेल्स. But when that guy gets on board, he has no knowledge about finance, and in wealth management you are actually going to manage portfolio of HNIs and ultra HNI, right? But if you are somebody who comes from finance domain, you understand कि यार मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो फाइनेंस भी जानता हो और जिसने सेल्स भी करा हो, जो बीकॉम वाला हो या फिर एमबीए फाइनेंस वाला हो या फिर कोई ऐसा हो जिसको सेल्स की नॉलेज है, फाइनेंस की नॉलेज है. सो दैट्स हाउ गाइस, दैट्स हाउ यू क्रिएट अ डिफरेंस इन योर कंपनी, एंड दैट्स हाउ यू रिड्यूस द अट्रिशन. यार अट्रिशन जाके पूछो, आपके फ्रेंड्स होंगे एचआर में, उनको पूछना अट्रिशन इज वन ऑफ द KRA. You reduce attrition for a company, you demand whatever you want growth, you want money, you want hike, ask any goddamn thing, company will give you, because that's how you create a monopoly in the company. It's not a correct word to use, but yes, whenever management wants to get in touch with a proper, good, effective, productive HR, it's going to be you guys, right? I have seen these things happening in the multinational company. So coming back to the business, तो अगर आप HR करते हो टिस में से, फाइनेंस ऑलरेडी आपने करा है लाइफ में, अगर आप HR करते हो, यस, क्या होगा यार, मान लिया आपने फाइनेंस करा वेलिंगर से करा, केजे से करा, सिडनम से करा, राइट? आपने क्या करा, आपने बैंक ज्वाइन करी, ठीक है, आप बैंक में चले गए, आप आईबी तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो, आईबी की बात भी नहीं करते, आप बैंक में चले गए, आप एनबीएफसी में चले गए, राइट? आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे वेल्थ मैनेजर बनके चले गए, 12 से 15 लाख आपकी सैलरी है, यू आर स्लॉगिंग योर एस, यू आर टॉकिंग टू पीपल, HNI, अल्ट्रा HNI, यू आर सेलिंग देम ऑल द 40 odd products. What are you doing at the end of the day? You are not doing anything, you are doing sales. So guys, if I look at the other side of this, what if you do an HR from TISS and join human resource of these companies? आपका पोजीशन बड़ा होगा, आपकी डिसीजन पावर ज्यादा होगी, आपका पैकेज ज्यादा होगा, यू विल बी एंजॉयिंग योर जॉब, आपकी ग्रोथ फटाफट होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सो फकिंग गॉडडैम हैप्पी विथ योर लाइफ. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी यार, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट. एक सिंपल सी बात होती है, आप कोर जॉब करते हो या आप नॉन कोर जॉब करते हो, बात वो नहीं होती. आज बात होती है प्रोफाइल की. जहां तक मैं जानता हूं, वी ऑल आर यंगस्टर्स, वी आर इम्पेशेंट फॉर सक्सेस, वी वांट क्विक सक्सेस. Next 3 years, we want to be a senior manager. Next 6-7 years, we want to be a general manager. Next 10 years, we want to be a goddamn vice president. So we want to grow, right? And these are the profiles which will help you to grow, because ये profiles में competition कम होता है ना. आप देखो यहाँ पे बात कर लो, अगर मैं ये वाली डोमेन की बात करूँ, ये जो छोटा वाला जो नीचे वाला है, यार कितने सारे मैनेजर्स हायर होते हैं बी स्कूल में, 20 मैनेजर हायर होते हैं बी स्कूल में, तब जाके 5 HR हायर होते हैं. समझा, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. जब 20-30 बच्चा लोग मैनेजर ऐसे ज्वाइन करते हैं, जो बिजनेस लेके आते हैं, एचआर की जॉब कूल होती है, आपको बस उसको ड्राइव करना है, राइट? एंड दैट्स द रीजन आई से दिस इज समथिंग दैट यू गाइस शुड बी फोकसिंग ऑन. सो यस, फाइनेंस वाला बच्चा एचआर कर सकता है, अनलेस यू वांट टू गेट इनटू कोर प्रोफाइल जहां पे वैल्यूएशन करनी है, ट्रेडिंग करनी है. अदरवाइज दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन. वन ऑफ माय स्टूडेंट, he worked with a PSU bank, okay? He was working with a nationalized bank. He worked for like 3 years. He never wanted to go for HR. Trust me, I gave him the option कि यार एक बार HR try कर लो. Today he is in TISS Mumbai. Okay, he is in TISS Mumbai, and he's happy, right? So what matters at the end of the day? See, it doesn't matter actually money doesn't matter, profile doesn't matter. What matters at the end of the day is what you do for those 14, 12, 18 hours a day on your job.
This is what matters a lot, and that's the reason, guys, I'm telling you this. Now let's move ahead and talk about IT companies now. ओके, आईटी कंपनीज, ठीक है। आईटी कंपनी में जॉब क्या होती है? बेसिकली ऑपरेशंस वाली प्रोफाइल आएगी आपके हाथ में, ठीक है। सो ऑपरेशंस में आप क्या करोगे? यू विल बी एक्चुअली मैनेजिंग पीपल, राइट। आपकी एक टीम होगी, उसको बोलते हैं प्रोसेस, यू विल बी मैनेजिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। दिस इज व्हाट यू गोना डू। नाउ हियर द डिफरेंस इज बेसिकली एज एन ऑपरेशन गाय यू आर मैनेजिंग टीम आउट हियर, बट चलो मान लिया आप आईटी वाले हो, मान लो आपने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है। आपने 1 साल 2 साल 3 साल आपने आईटी में काम कर लिया, आप बिजनेस एनालिस्ट थे, आपने एक क्लाइंट मैनेज कर लिया, आपको एसएलए पता है, आपको केआरए पता है, आपको बिजनेस जो डॉक वगैरह होते हैं वो सब पता है। मतलब यार मोटा मोटी आपको पूरी प्रोसेस पता है एक आईटी कंपनी की कैसी चलती है, ठीक है। अब 2 बच्चे हैं मेरे पास। एक बच्चा है जो जाता है ऑपरेशंस में, ठीक है, जो क्लाइंट के साथ बात करता है, जो टीम हैंडल करता है, क्लाइंट की गालियां भी खाता है, कभी कभी अप्रिसिएशन भी लेता है। और मेरा एक दूसरा स्टूडेंट है, मान लो वो बंदा जाता है एचआर में, और टिस में से वो एचआर करता है, ठीक है। तो पहली बात तो है, अगर मैं मान लो इन्फी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यहाँ पे इन्फी है, इन्फी का मान लो कोई एबीसी कंपनी जो है बैंक है, वो क्लाइंट है। नाउ ये जो बंदा है हमारा ऑपरेशंस वाला बंदा, वो एबीसी वाला जो क्लाइंट है उसके साथ डेली बेसिस पे बात करेगा। बट नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज बेसिकली, अगर इन्फी का क्लाइंट एबीसी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हो, राइट, यू आर मैनेजिंग द स्टफ। बट इफ यू आर एन एचआर, योर जॉब इज इवन मोर कूल, बेटर, योर जॉब इज एक्सीलेंट। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दिस लेवल 1 वाला जॉब, right? You're doing a managerial job. So there is a concept called as business HR now. Okay, it's a biz HR. People call it as corporate HR also. दोनों अलग अलग है, but anyway, it's a nomenclature by the way. Now होता कैसे है? आपकी जो मैनेजमेंट होती है, आईटी की जो मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे आपके आईटी मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं? मान इन्फी का एग्जाम्पल में वो क्या करते हैं? एबीसी क्लाइंट जो है, इसके अंडर मान लो 500 से 1000 लोग काम करते हैं, उसको एक एचआर अलॉट करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एचआर। अब ये इस एचआर की मेन जॉब है कि जो भी इस प्रोसेस में चल रहा है, जो भी 500,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, यू शुड नो, सो यू शुड बी वर्किंग ऑन एचआर डोमेन ऑल्सो एंड यू शुड बी वर्किंग ऑन टेक्निकल डोमेन ऑल्सो। मतलब यहाँ की रिक्रूटमेंट भी आपको देखनी है, इनकी कॉम्पेन बेन आपको देखनी है, इनकी जो ग्रोथ है वो देखनी है, करियर प्लानिंग आपको देखनी है, आप बिलिंग भी देख सकते हो। एंड अगेन यू नो, एज आई सेड, लाइक यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट। तो nowadays अगर आप देखोगे आईटी कंपनी में HRs आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इनटू स्ट्रैटेजी। जब क्लाइंट से बात होती है तो nowadays HRs आर ऑल्सो टॉकिंग टू क्लाइंट। तो यहाँ पे अगर आप बात देखोगे, अगर आप एक चीज देखोगे, तो जहां तक ऑपरेशंस मैनेजर का सवाल है और जहां पे बिजनेस एचआर का बात है, बिजनेस एचआर प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल। एंड इफ यू आर अ बिजनेस एचआर, देयर विल बी 5 to 10 छोटा छोटा एचआर वर्किंग अंडर यू, एंड you just have to drive this. So rather than working in a position of operations manager, same company, same CEO, same location, same office, खाली डोमेन अलग अलग है, पैकेजेस भी अलग अलग है। ये ऑपरेशंस वाला कहीं से भी आ सकता है, ये जेबी से आएगा, केजी से आएगा, वेलिंगर से आएगा, आईएम से आएगा, बट इसका वर्कलोड देखना और ये एचआर वाले का देखना। सो इस यहाँ पे तो कंपटीशन बहुत सारी है, यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है, एंड यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक अ किंग बिकॉज यू हैव सच अ ह्यूज बिजनेस टू बी मैनेज्ड बाय यू, अनलेस यू आर डूइंग एनी goof up. तो यहां पे बात यही होती है कि यार आईटी करके भी अगर आप एचआर करते हो, डोमेन नॉलेज अगर अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज अगर अच्छी है, यू गोना बी अ सुपर डुपर एचआर। सिंपल। सेम गोज विद योर मार्केटिंग ऑल्सो। अगर आप मार्केटिंग के बंदे हो, जिसने मार्केटिंग पढ़ी है, जिसको पोर्टर 5 फोर्सेस पता है, ब्रांडिंग पता है, अगर आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, अगर आपने बीएमएम में पढ़ा होगा, then definitely you can be a good HR. You can work with FMCG, right? You can work with FMCG companies. You can work with companies who are into brand management. You can work with companies who are into digital marketing. So the whole and sole purpose that I'm trying to tell you guys here is that you need to understand how is the synergy going to work out between what you have done in your graduation and what you're going to do in HR now. This is the best option that I can offer you. Trust me, people are not talking about it because I don't know why they are not talking about it. But anyways, I wanted to put this across to you guys. You guys are MBA aspirant, right? You got to think about this, okay? You are not supposed to go and do only the stereotype MBA finance and all that. Don't be ashamed. Don't be ashamed of saying that यार मैं finance का बंदा हूँ, मुझे HR करना है. It's okay. Nowadays even guys are doing HR because yeah, I mean like the market has changed. Things have changed now. I have 3 students in TISS from Pune का batch. One guy banking वाला बंदा got into actual HR. दूसरा बंदा था, he has done some medical का course उसने कुछ करा था, and then he came and then he joined actually into healthcare का program. I have girls from Ferguson College, did psychology. Now they are into clinical psychology program of
but TISS, by the way. So there are a lot of people, you know, in Pune classroom have made it to TISS. And when they came to me, actually, जब मेरे पास बच्चे आते थे finance की job, finance लेके, marketing लेके, I gave them the different perspective. They never thought that they will be doing HR, but now they are enjoying their life because they know 2 साल के बाद क्या profile होगी और 5-6 साल के बाद किस level पे बैठोगे आप company में. Fine guys. So yeah guys, I hope this information helps you. मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें cover नहीं कर पाया यहाँ पे. It's not possible to cover everything. But yes guys, अगर आपको कुछ doubts है, you know, if you want to talk to me directly, you know what needs to be done. You can directly get in touch with me on my Facebook page. You can kind of, you know, WhatsApp me or message me and I'll help you. So think about it. Try working out this option. If it works out for you, I'll be really happy. But do give it a shot, guys. Yeah. And yeah, thank you so much for your time. And I definitely look forward to you guys to work on TISS. Okay. Good luck, guys. Thank you so much.